Welcome back, children, to my channel once again. This is Gopavandhu Karmaka, and I will again go through one of the poetry of the class 10, all things bright and beautiful. Children, let's understand bright and beautiful. So, all things bright and beautiful. This is your poetry poem, and we are going to learn this. Again, I will tell you the same thing. Bring in your notebook, pen, and keep writing. C.F. Alexander is the poet here. She is the poetess. Okay, children. She is the poetess. Okay, children. Se kobi ni otante. Hela. Let's understand something about C.F. Alexander. Okay. Today is again the time for long question, children. I have already given you the question answer of the exercise. You can see better here. These are the all question that have been answered, and these are also questions. सब प्रश्नर मो सब उत्तर दे सारी मैंने आज आम देखा मैंने टुडे विल सी लॉन्ग क्वेश्चंस the question that has frequently come in the examination and how they are making impact on the mind of the students. Okay, that question should be given today. So let's see that question, children. And you can see, children, this is the question. You can see, children. Question is all things bright and beautiful. Each question carrying 5 marks. This kind of question that you can get welcome in the examination. The important question that to discuss at this question. How does C.F. Alexander describe the bright and beautiful things in this poem? All things bright and beautiful. This question has taken place in 2020 essay 2 in board exam. So it is very important to be discussed, children. What is the question? Again, let me tell you. C.F. Alexander describe how does C.F. Alexander describe bright and beautiful things in the poem? All things bright and beautiful. So the poet is what? C.F. Alexander, we know that, and he has described flower bright and beautiful. The poet in the poem, all things bright and beautiful, describes. Audio meaning has been given. All the things we see, feel and sense as beautiful. जहाँ भी आम जिन देखू से आम जाको अनुभव करूँ से समस्ते कौन है आ ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ द ऑलमाइटी गॉड भगवान कर सर्वशक्तिमान भगवान कर सुंदर सृष्टि अटंती सी ब्यूटीफुली पोर्ट्रेट ऑल द वंडरफुल थिंग्स गॉड हैज क्रिएटेड फॉर अस से सुंदर भाव में समग्र कौन ये सुंदर जिनस को चित्रण कर पोर्ट्रेट मीन्स चित्रण करवा चित्रण करवा ओडिया में मुझे लिखी ना तुम्हें चाहे ये कर चित्रण करवा हेगला चित्रण करवा ये कई लिखुचे ये चित्रण करवा यार मान मैंने चित्रण करवा चित्रण If somebody is not capable of understanding the meaning of this words given, children, please write in the comment box. Okay, so that I will write the meaning of this question. The wonderful things God has created, Suti question for us, starting from the little flower, chotiya chode to aramb koreki, with their colorful petals. छोटिया फूलटे जहाँ सुंदर 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 कौन रंग रंगीन पाखुड़ा अच्छी पेटाल माने कौन से माने पेटाल माने है पाखुड़ा पेटाल रो माना होची माने पाखुड़ा एठी मुले के दउची पाखुड़ा ओहो उल्टा कथि सरे गेल प हो छने पाखुड़ा हैला ना पाखुड़ा फूलर पाखुड़ा हेगरे ना तापर देखबा है मैंने द लिटिल बर्ड्स विथ द टाइनी विंग्स और छोटिया चढ़ी माने
तांकर छोट डांस सुंदर देखा जाउछन्ते एंड द मेलोडियस संगीतमय लिखा मय होता मय यो होता छमने टिके लिखबार टिके कर देछि मद लिखे सॉरी छमने मय संगीतमय आउ कौन संगीतमय जो सुंदर गीत नेले ना चढ़ेईर सॉन्ग्स टू बिग माउंटेन्स ए रिवर विथ रसेस हैला आ बड़ बड़ पहाड़ आ रसेस जो कि जलाशय निकट जो कौन घास बड़ा जिनस उठे फॉरेस्ट ट्रीज फ्रूट्स एंड चिली वाटर माने ठंडा कोल्ड एंड द प्लीजेंट समर सीजन्स ब्यूटीफुल सनसेट एंड द सनराइज सुंदर सूर्योदय और सूर्यास्त The poet sees the beauty of the gods marvel in all aspects of the nature, hails the Almighty for creating everything well. भगवान सब कुछ से ये चित्रण करछन्ति जहा कोन all aspect समग्र ये रे दिगरे हैला प्रकृतिर हेल द Almighty creating of everything से जेड़ा कि सर्वशक्ति भगवान करो विविध मान सृष्टि को दर्शाउछे देखा जाउछे हेगला ये है तुम छुआ माने 3 नंबर फर्स्ट क्वेश्चन दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट क्वेश्चन है ना फर्स्ट क्वेश्चन आंसर यहाँ हम छुआ माने तुमको 50 वर्ड लिखा पड़ो 4-5 वाक्य तो तुमको निश्चित भाव में लिखा पड़ो क्वेश्चन नंबर 2 दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट हैज गॉड मेड the question that has taken place in 2022 essay 2 God has made all things and creature around us भगवान नाम चारि पाखरे समग्र जिनस समग्र प्राणी को सृष्टि करछन्ति he has made all things bright and beautiful समग्र जिनस को सुंदर और उज्जवल करछन्ति great and small छोट महान wise and wonderful विज्ञ विस्मय करो he has also made beautiful flower and singing bird सुंदर फूल एवं गीत गाउथबा चढ़ई को मत से सृष्टि करते the weathers the sun pago the mountain and the trees and the fruits and the river the forest and each everything that we know of on this earth समग्र जिनस जहा को हम जानू has been created by God who has made all things how has he made them this question has taken place in 20 and 23 essay 1 remember this children and the almighty god the almighty God has made all things he has made them well so as to fit the places on this planet he has made all things bright and beautiful and perfect where they should be. Everything around us has been given proper attention and made useful for everything. So the question that I have told you is the Almighty God has made everything. The God has created everything well. सब किसी ठीक ठाक कर बनाई He has made them well. Says empty hours ठीक ठाक बनाई so as to feed them the places in this on this earth planet ए धरा फुट ताकू ठीक जगह रखिया पई फिट करिया पई से सठिक जिन सठिक जगह को जिनस कोठी रखा जिवो से सारा को बनाई छंती he has made all things bright and beautiful so समग्र जिनस को सुंदर और उज्जवल करछंती and perfect the way they should be आउट ताकू संपूर्ण भाव जेठी से माने बसा जाई परबो ताकू सेट करी छंती everything around us has been given proper attention आम चारि पाखरे जहाँ भी रही कौन मुख्य आकर्षण दि जाइए भगवान को तारा एंड मेड यूजफुल फॉर एवरीवन आ सुनिश्चित कराई समस्त दरकारी हेगला छन बुझी पाइगल कमिंग बैक टू नेक्स्ट क्वेश्चंस ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 देखी पारुछ दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4 हेगला ये क्वेश्चन नंबर 4 आ पूर्व आम देखले ये है क्वेश्चन नंबर 2 हेगला मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड एंड दिस इज योर
Question number 3. No, 1, sorry. 1. And we have discussed already this question. Okay. This is very important that has come. Okay. now ये मसीहा गुड़ाक देख मैंने कौ के मसीह पड़े अब आग को ये पड़ पारे होगा तार क्वेश्चन नंबर 4 देखा मैंने क्वेश्चन नंबर 4 आम देखा मैंने कौन कहुई दि फ्लावर्स आर ब्यूटीफुल विथ देयर ग्लोइंग कलर फूल गुड़िक तांकर सुंदर रंग से माने उज्जवल रंग सुंदर अच्छा नहीं ना each little flower has been endowed with the vibrant color जीवंत तांको रंग दिया जायछि that pleases खुशी देवा है खुशी दंत सेटा को म करे छरिछ माने टाइपिंग रो मिस्टेक एठी ये खुशी लिखि जो है ना खुशी देवा सॉरी चिल्ड्रन जाके हमको आखे को खुशी दे द लिटिल बर्ड that have the tiny wings जार छोट डाना अच्छे which make them look adorable सुंदर देखा होची the birds also have the ability to sing and their sweet voices fill the heart with joy एवं तार गीत गाइबार सामर्थ्य अच्छे एवं ताको सुंदर संगीत हमको हृदय को कौन करछा माने आनंदमय करे ताला बुझी पारछ माने ये हला तुमरो केते नंबर एटा देथवा ना ए जानि परछ एगा क्वेश्चन गाछ माने एगा आंसर गुडा को हला ताको मन रखबा सामने 5 नंबर दिबा 5 नंबर कौन कहै माने व्हाई द सन कंसीडर्ड प्लीजेंट ये परीक्षार बहुत पढ़ी माने 201 लिखा 2001 छ माने आ गोटे मु सुन एठी लिखि थी 2001 रे आछि 2018 आछि 2018 2022 आउ ऐसे 1 ऐसे 2 रे ये दु जगह रे आसी सारी छी ये को मन रखबा छ माने है ना हेगला छ माने कौन कहै प्रश्न हैला सामार को काहे कि हमें प्रेजेंट बोली कहता पूर्व रे कहतली आई हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट हैला या पूर्व को लाइन बाय लाइन को जेटे कि म बुझे दिया छ मन तार आंसर ता पूर्व रे भी कह देछि आज आउतर कह दिए हेगला रियली कौन हुए the country that the poet is belong to is a cold country. In the cold country, the winter is the dominating season. That means the season that cover all the maximum month. Okay. On the little more that has to be covered is this summer. अल्प मास ही एक 2 मास ही कवर करे ग्रीष्म ऋतु हेगला ना जमती ग्रीष्म ऋतु से आफ्टर on the set in of summer season हैला people start enjoying because the summer is not so much extreme heat the way we get in India. Okay children, summer is not so much extreme, so it is very pleasant to them, and they also have this chance of enjoying sunshine after a long time. When something comes after a long time, we always welcome with joy and love. So here is the same situation that has been found to welcome that a summer as pleasant. Okay, so question, let's read the answer children, then I will tell you. The summer sun is bright over there in Dublin, England, Ireland. You can see, okay, that's a cold country. The summer is bright, warm and comforting. Summer over there is bright and comforting and warm. It brings the warmth that people, especially in the cold countries, long for throughout the winter.
ताले एटा किछ हमको उषुम दिए टिके ताप दिए टिके स्वस्ति दिए आफ्टर having torture or having worried worried putting on winter woolage for the longer period of time, means throughout the year. It has it also provides relief from the cold and wind of winter and is soothing to all. एंड एटा कि करे यहाँ मध्य समस्त को रिलीफ मत दिए एते दिन शीत पोशाक पिंधबार आउ सुथिंग टू ऑल समस्त को सूट मत कले आ समस्त को भल लगे यहाँ सो दी पोएट कन्सिडर विवेचना करबा करछंती इट टू बी ए प्लेजेंट तेणु यहाँ को से कौन समर को प्लेजेंट बोली कहते सो ही सी हैड considered the summer to be pleasant. Okay children, the poet considered it to be pleasant. हेला बुझी पाइ गलो छमने आई होप यू गॉट दैट हेगलो छमने एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा ये छमने नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी बेटा दिस इज योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 6 वेयर डू द रसेस ग्रो रसेस गुडा को कोठी ग्रो करवा we know that rushes that to be used to making or to make what sweep basket and other articles domestic article to be used at home. How are they useful to the people तार से माने आमे खन कोठी ग्रो करंती how they are useful to us. This is the question all about. Okay, rushes are the waterside plant एगुडा को waterside plant अछंती साधारण जलाशय निकट रे माने पड़ी थांते that grow by rivers and water bodies जतकि वाटर बॉडी रिवर ए पाकर से मनकर एक्जिस्टेंस देखा जाए राइट चिल्ड्रन पीपल गेदर रसेस टू मेक मैट्स बास्केट इटिसी लोक माने कोन ए झाड़ू आ मशीना तैयारी करबार ताको व्यवहार करंती आउट ऑफ दोज they provide them with an asset or an opportunity of earning आ अन्य क्षेत्र यहाँ मध्य रोजगार गोटे पंथा मध्य दे था because after making the sweep of basket they sell in the market and by the value of that money they means they do something they earn money. Okay, value of that what reed or the trusses that they collect from the river side or the water bodies. Okay, thus they are useful for the people ए पर या लोक मन का पई दरकारी होते हेगला छ माने नेक्स्ट लाइन तापरे देखि देबा नाउ 7 नंबर चिल्ड्रन 7 नंबर इज क्वेश्चन नंबर 7 here you are asked to how has the poet described the god. The question is how has the poet described the god. तले भगवान को किमती कवि ने हमर छंती सी एफ अलेक्जेंडर ताको वर्णना करछंती हेगला छ माने सुंदर भाव निश्चित भाव वर्णना करछंती द पोएट कौन लिखा छ माने द पोएट हैज डिस्क्राइब्ड द गॉड एज ए ऑलमाइटी क्रिएटर ऑफ द वर्ल्ड ए सृष्टिर सर्वशक्तिमान व्यक्ति भाव ताको कौन कहि छंती. She said that the God has created all things and being that we see. से कहती जे भगवान समग्र जिनस को तैयारी करछंती आउ जेतके भी जीवन जीव अछन तांको मत he has given the flower their color फूल को तांको रंग दैछंती and the birds हला एबे तार मीनिंग एठारे दिया आइछि तो मन देखि परबे एठारे these are the meaning has been given हेगला छ माने या को पढ़ी पारबा. तो नेक्स्ट क्वेश्चन को चलीबा छ माने ये छ माने 8 नंबर देखि पार छ. दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 8 यू कैन सी चिल्ड्रन दिस वन है ना दिस इज 8 नंबर व्हाई द गॉड हेला छ माने बुझी पाइ गलो कोन को आइतबे God has given us senses so that we can appreciate प्रशंसा करबा छ माने एटा को ठीक कर लिखा दे पालाने से ये लेटर तो पाइली नि छ माने टाइप करला बडा प्रशंसा या को काटो हेरा छ माने तल प्रशंसा करछंती हेरा
ये पढ़ी पार्छ छमने का द मैग्निफिसेंट क्रिएशन ऑफ द क्रिएशन he has she has এটা অবশ্য মানে she has given as মানে সেটি ভগবান ঠিক আছে ভগবান মানে হি ଅଛି ঠিক ଅଛି মানে he has given us eyes to see ହେଲା things around us ears that we hear see sweet sound of the nature touch to feel the splendor ମହତ ଦର୍ଶନ of the creation our taste to realize मजा नेबा the delicacy ହେଲା शोभा of nature above all lives to praise the glory of ହେଲା छमने पढ़ी पार बेटा 9 नंबर देखि पार्छ छमने ये 9 नंबर how does the poet describe the beauty of the nature in this poem केमती वर्णना करछन्ते देखि पार्छ हेगला the poet described the beauty of the nature in her poem with a few objects of nature किछि प्रकृतिर जिनस को देखि से कहछन्ती she talked about the glowing color of the flower सुंदर फुलर और उज्जवल फुल ते कहछन्ती and the tiny wings of birds छोट डेणा चढ़ी मनकर से विषय the mountain whose top is draped in bright purple color and the river that flows by and the grasses the trees in the forest and the meadows where the children play and the sunrise and sunset the winter and the pleasant summer sun the ripe fruits in the garden everything gives us the charming picture of the beautiful nature एगा सब मन मोर को अच्छा माने हैला 10 नंबर ये हैला छ माने 10 नंबर ये देखि पारो छ कौन का इज द पोएम ए डिस्क्रिप्शन और ए प्रेयर है ना ये भी तुम बही रही अच्छे व्हाट मेक्स यू थिंक सो तुमको कौन लगो छे एबे छ माने यहा गो डिस्क्रिप्शन ना प्रेयर दिस इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिप्शन व्हाई every description has been given about the creation of the god the importance and magnificent creation of the god hala to the reader so therefore it is more of a description less of the prayer of course it is all about the god's praise but it is still a description so let's start children reading this poem is a hymn mane jonana koi parbo tume here the poet admires the beauty of the god's creation she tells the readers about all things and good and god has created where god had created them hegala na she sings the glory of the almighty god so to me this poem is a song of praise or eulogy rather than a prayer माने वर्णना करबा राइट अबाउट द तापर 11 नंबर छ माने दिस इज योर 11 नंबर write about the small and the bright things mentioned in the poem ये परीक्षा आसला छ माने हेला ना ए वर्ष भी आसला कोन को छ माने the small things mentioned in the poems are the little flower with the little bright color and the small birds with the tiny wings and the bright things mentioned in the poems are summer sun and the sunrise हेला and the sunset এটা বেরিয়ে যাচ্ছে মানে brighten up the sky and make the mountain purple हेगला छ माने बुझी पाइ गलो एमिति छु माने क्वेश्चन आंसर थिला एगा सब मु तुमको आलोचना कर देछि हेगला ना आशा करते माने बुझी पारे छ हेगला ये 7 नंबर रु 1 नंबर पूर्व आलोचना कर देली 10 टी लॉन्ग क्वेश्चन मु दे देली आई हैव गिवन यू 10 लॉन्ग क्वेश्चन आई होप यू विल प्रैक्टिस देम ओके चिल्ड्रन एंड गेट रेडी फॉर द एग्जाम ये है 5 मार्क वाला मुझे देखली छ माने नेक्स्ट टाइम आई विल गिव यू 2 हाफ मार्क ऑफ 10 क्वेश्चन ऑफ ऑल थिंग ब्राइट एंड ब्यूटीफुल 10 टी प्रश्न देबी पुणी हाफ 2 हाफ रो कांगे 2 हाफ रो परीक्षा आसुची जा तुमको हेल्पफुल तुम पाई हेबो हेगला छ माने आशा करे सब बुझी पारे छ हेगला ताला जी बाय आ गोटे वीडियो रे मु 2 नंबर वाला 2.5 नंबर वाला 2 हाफ मार्क रो कर देबी हेगला थैंक यू बाय